ओके। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट वंस अगेन। गना शॉट में दोबारा आपको स्वागत है। नमस्कारम, वणक्कम एंड व्हाट हैव यू। आज हम दोबारा एक दिलचस्प विषय के ऊपर बात करना चाहते हैं, या बात करेंगे रिलीज ऑफ द खान। और क्योंकि आज जो घटनाएं हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, और इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जनरल दुष्यंत सिंह। जनरल दुष्यंत, वेलकम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, धन्यवाद। आज का दिन ऐतिहासिक है मेरे हिसाब से कि आज शायद सच्चाइयाँ पता चल रही हैं। अभी तक जो कंजक्शन था वो सच्चाइयों में तब्दील हो रही है, तो मेरे ख्याल से कुछ कुछ पिक्चर और क्लियर होती नजर आ रही है। या ये आपने जो बोला है सही बात बोला है। पिछले 4-5 दिन से लगातार मैं ये पाकिस्तान के में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसका ट्रैक कर रहा हूँ, और आज के डेवलपमेंट बड़ा दिलचस्प है। पाकिस्तान को मेरे ख्याल में एक मोड़ पे खड़ा कर दिया, जहां आगे जाके थोड़ा इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल ट्रिकी, राइट। सो व्हाट आई डू इज, आज इससे पहले कि यू एंड आई स्टार्ट कन्वर्सेशन एंड back and forth, I'll put across a few slides and set the thing so that we know कि क्या आज का स्थिति क्या है और इसका उनकी तरफ से क्या विचार है। क्योंकि अमूमन हम अपना विचार डाल देते हैं सबके ऊपर, उनका क्या विचार है, पाकिस्तान में क्या सोच विचार है, उसके बारे में बात करूंगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपका, इफ यू डोंट माइंड, शुड आई स्टार्ट और क्या है, बिल्कुल और कुछ बिल्कुल, बोलना चाहते शुरू करिए सर। सिर्फ मैं यही कहूँगा कि अब जो विचार पाकिस्तान से निकल के आ रहे हैं वो हैं? कहीं ना कहीं इस दुविधा में है कि क्या वो सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। उनकी हालत हमारे जैसी हो गई है इस समय जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की है। नहीं। अब जैसे कि किसी ने अभी कुछ दिन पहले बोला, कल मैं प्रोग्राम में था, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे जो इंग्लैंड में रहते हैं, उमर ओके। फारूक। उन्होंने बोला कि जो अभी जो स्थिति है वो पाकिस्तान आर्मी की जो पॉपुलैरिटी हुआ करती थी 60-70%, वो अब इमरान ने ले ली है। तो इसलिए कहीं न कहीं इमरान खान जो है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हावी हो गया है। या आई मीन इसमें डाउट नहीं, नहीं ये उसके इसी के एक रीजन बारे भी में, है। इसी के बारे में हम बात भी करेंगे आज। बिल्कुल। ओके, ठीक। सबसे पहले, नो, रूपा राव, आई गॉट अ नाइस कमेंट, आई थॉट आई शेयर इट विद एवरीवन। वेरी नाइस डिस्कशन एंड ओपन सेशन। कल हमने ओपन सेशन किया था, किसी को जो उनका सवाल पूछ सकते हैं और आंसर कर सकता हूं मैं। And on the ongoing instability in Pakistan, couldn't attend it live, but thoroughly enjoyed listening to the discussions. Ghana Short is the best channel for defense and geopolitics discussion. For me, it's like being a kid in a candy store. So much to learn and absorb. Thank you, sir, for this channel. Hope it grows much bigger. It will grow bigger अगर आप सब हमारे साथ हैं. So I thought, let me share it. I'm sure all my colleagues who come on Ghana Short are, would like to hear. The operative sentence in this is, it's like being a kid in a candy store, right? We will come up with more in future. Okay, सबसे पहले जिस तरीके से मैं देखता हूँ, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये है कहानी एक्चुअल। इनका ये कंगाल है। Rupee has gone down to 290. It in fact it went up to 301, and I think some stability has happened, but it's still in a bad shape. आप देखिए इनके इकोनॉमी, इन्हीं का बात। ये देखिए, ये जितने कार्टून हैं ये इन्हीं के कार्टूनिस्ट हैं। मेरा सोच विचार नहीं है ये। जहूर है, जहूर इज फ्रॉम डॉन। सो दैट्स द इकोनॉमी दे आर गार्डिंग। हड्डी बचे हैं। और देखिए आम आदमी किस तरीके से तितलियों के पीछे भाग रहा है नॉर्मल सामग्री के लिए। सबीर नजीर का ये है। या मजे की बात यह है कि दिस कार्टून इज 2 years old। 2 साल पहले की कार्टून और आज में सच्चाई वही है। और ये जो कार्टून है इस आयरॉनिक, ये 2-3 साल पहले की कार्टून है, जब पीपीपी, पीटीआई और नैब, यही नैब ने मिलके दे पुट नवाज शरीफ ऑन द फायर। ठीक है, उसने कर दिया। और आज के दिन क्या है, वो उल्टा है मामला पूरा, राइट। वही पीपीपी, वही नैब,
राइट, और नवाज शरीफ के बदले इमरान खान उसमें है, राइट। तो वक्त की बात है, पाकिस्तान में ये चलता रहता है, इट्स लाइक अ मेरी गो राउंड, वन गोज ऑफ वन कम्स इन, राइट। ओके, एंड विल टॉक ऑफ दैट। टुडे has been a battle of red lines. Now the courts have given Imran Khan immunity from arrest from all courts, all warrants till 15th May, right? I'll not go into details, but he's today actually walked out free. And I don't know just to whether he's gone back or not. just to add, all new cases also. Yeah, So all new cases. Yeah, they can't resurface a new case, you know. yeah. So no, they can't even put in a new case. Yeah. It's in the evening in one of the news channels. They said that government is considering emergency seriously, right? And with the help of the army, the DG NAB has been sacked. A new chap has been put, and incidentally, he was a retired army officer. Then there's this issue कि जब इमरान खान अरेस्ट हुए थे तो उसको पूछा, some he had an interaction with the press, and there he asked a question, अगर आप हमें अंदर कर दोगे तो who will control the masses, ठीक है ना? तो in what he has done is, in this sentence he has put a gun on someone's head, on Pakistan's head, कि आप हमें करंट अंदर डालिए, फिर यहाँ बाहर तहलका मचेगा. Okay, and then of course there is why I'm saying battle of red lines. It is because the army had a set of red lines where certain things could not be challenged. Imran Khan has crossed them. PTI and Imran Khan had a set of red lines that he cannot be arrested. Army has crossed that. ये दोनों तरफ से red lines cross हो गए. I think now Pakistan is in a zone of uncertainty. Right? There are options which can still work out, but let us see how it goes. Okay. There's been a major TTP attack at a place called Kela Saifullah. One report says 16 casualties and 40 have been wounded. The Dawn has said about 2 casualties. Somewhere in between it could be, right? Okay, and ये पिछले 12 घंटे से चल रहा है. ये जो पुराना DG ISPR है आसिफ गफूर, it's happened in his area in 12 Corps क्वेटा के इलाके में. SHG commandos have been drafted into the whole story. But the larger picture क्या है पाकिस्तान के अंदर, वो तो instability तो हो रहा है TTP का. उसके अलावा more than 100 officers and some of their wives have been arrested and they are being investigated for supporting Khan, Imran Khan. Corps commander Lahore has been sacked, new chap has been put in, right? The naval, this is a report. If this is right, there's a problem for Pakistan. Naval Air Chief and the CGCSC have refused to support Asim Munir on banning PTI or any crackdown in Pakistan. अगर ये है तो there's an open rift. असीम, ये CGSC के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि he is working behind the scene to become the chief of the army staff. Correct. और उसको काफी political patronage भी मिलेगी. Yeah, or political patronage, of course, he'll get it from Imran Khan. Of course. Yeah. So that is on. So there's a clear rift in the army, right? Again, 6 lieutenant generals are against Asif Munir and PDM. Again, reported, the names are there: Asif Ghafoor, Malik, Norman Zakira, Saqib Malik, Salman Ghani. He was a chief corps commander 4 Corps who's been sacked. Sardan Hassan Azhar. So let us see where this goes. And they're all supporting a solution by the Chief of General Staff. Yeah. and the Chief Justice of Pakistan, who's emerged as a important player. Yeah. And this is a new report. I just got it about half an hour back. आधा घंटे पहले हमें मिला है. ये इतने ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर्स के लेवल में, COs, commanding officers of battalions, who have been sacked. We don't know whether it's right or not. But we've been getting reports मिलते आए हैं कि ये कुछ डिसेंट है, पर ये मेरे पास पहला रिपोर्ट आया है, देखेंगे क्या है. Don't you think this is a pretty serious thing, Dushi? Absolutely. In fact, अगर आप अपना ध्यान ले जाएं तो पिछले 3-4 एपिसोड्स में हम ये बता भी रहे हैं कि एक इंटरनल डिसकंटेंट शुरू है आर्मी में, जिसमें कि वाइव्स एक्चुअली पोजीशन ले रही है
बिकॉज हस्बैंड्स तो ऑफिशियली पोजीशन ले नहीं सकते हैं, तो वाइफ ने सोशल मीडिया पे पोजीशन ली, और ये जो अरेस्ट भी हुए हैं ये बेसिकली सोशल मीडिया को मॉनिटर करके, जिनकी वाइफ्स देखी गई हैं कि दे आर ट्वीटिंग एंटी पाकिस्तान और प्रो ईरान, आई वोंट से एंटी पाकिस्तान बट प्रो ईरान issues, they have been arrested, and I believe the numbers are 100 from 100 to 400. That is the that is the figure. That is the ये figure जो which है, yeah, I completely go with you. So there's a serious situation. There is a problem at the top, there's a problem at the bottom also. बिल्कुल. Okay, and now they're going, this chap is trying to impose emergency, right? And then okay, now अगर आप देखोगे पूरा, अगर ऊपर, you know, you see the larger picture, there's a very clear division. The army, the PDM and the election commission is on one side, the PTI and the president are on the other side, the judiciary is in the center, and for the first time they're playing a decisive role. अगर आप इनका history देखोगे, पाकिस्तान का history, whenever there was a martial law, whether it's in the case of Ziaul Haq or during the time of Parvez Musharraf, the judiciary supported the martial law. Absolutely. Again, the judiciary, if you remember, Parvez Musharraf को जब वो lawyer strike हुआ था, it was the judiciary which played a key role. Correct. Again, it was the judiciary which played a key role in exiling Nawaz Sharif. Correct. Or for that matter, Bhutto को hang करने के लिए भी. So the judiciary is a key player, and it is again playing a key role. आज का दिन क्या हो गया, कल 3 दिन पहले वो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको अरेस्ट कर दिया. आज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कल उसने बोला, आई एम हैप्पी टू सी यू. When he said I am happy to see you, he's actually given a large message, right? To say that, look, nothing will happen to you. And that thing जो हम सोच रहे थे कि इमरान खान will be put under arrest and taken away and whisked away and all that, that's gone. And जो आज हो गया है, उसके साथ तो ये अरेस्ट भी नहीं हो सकता. 5 दिन में कुछ भी हो सकता है, ठीक? And if you cannot arrest him, or even if you arrest him, and if he's going to get bail from the Supreme Court, बिल्कुल. right? So he's going to be a free man. I think the whole story has changed. Now the second option of putting him away or poisoning him and assassinating him is virtually out. He can be either assassinated clean, that's possible, like it happened with Benazir Bhutto, right? Or the army and the PDM can go in for emergency if they have the clout, right? And or I think the third option, of course, is Imran Khan might force elections on. If there's a fourth option which happens, it's chaos. एक और ऑप्शन की बात यहाँ लोग कर रहे हैं, और वो ये है कि इमरान खान को जुल्फिकार अली भुट्टो वाली सिचुएशन में ले जाएंगे, और उसको ले जाने का जो तरीका है, दे आर वेटिंग कि जब ये चीफ जस्टिस रिटायर होगा तब एक बहुत टाइम है. हाँ, अब ज्यादा टाइम नहीं है, 1 साल का कुछ बोल रहे थे टाइम है. तो अगर ऐसा होता है तब तक खींचेंगे इसको, और फिर उसको इमरान खान को एलिमिनेट करेंगे. और दूसरी इंटरेस्टिंग बात देख रहे थे हम लोग, बात करते थे हायरार्की में पाक मिलिट्री, देन सिविल गवर्नमेंट, एंड देन बात करते थे जुडिशरी की. आज मुझे लगता है कि जुडिशरी ऊपर आ गई है, नहीं, और पाक मिलिट्री नीचे आ गई है. सबसे नीचे आ गई. और दूसरी बात, या एक और बात है, इंटरेस्टिंग बात, ये मेरे ख्याल में इमरजेंसी भी मुश्किल होगा, बिकॉज इमरजेंसी के लिए वो प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर चाहिए. अलवी साहब के. हाँ, so it has to be a emergency which is declared by the parliament and backed by the military. It will be unprecedented. It's against all whatever democratic means they have. It will be in some kind of a martial law, half-baked martial law. So things are going to be difficult. But I don't know, 1 year is too long a time at this point of time to look into Pakistan. अगर कल के दिन तक ही देख ले तो बहुत है. देखिए, मार्शल लॉ और इमरजेंसी भी लगाने के लिए उनको प्रॉब्लम हो गई है. अगर पाकिस्तानी आर्मी का पूरा टॉप जो है हायरार्की है आधे में बट गया है, तो इमरजेंसी लगाने वाले ही बट गए हैं. Yeah, so there is going to be problem, right? So let's see how.
Yeah, there are major problems now at this point of time, so we'll have to see how this goes. Okay. Okay, so but one thing is for sure, you'll agree there's a lot of instability in the horizon, बिल्कुल, बिल्कुल। right? I don't think right. Okay, ये जो है ना डॉन का ऑपेड में था, this is by Asim Sajjad Akhtar. ये extracts, and I'll just read through it. He talks of omnipresent establishment which has created a Frankenstein it cannot control. Now, the establishment's patronage of Imran was based on its calculation that a younger generation of mainland Pakistanis, bred on insular Pakistani nationalism, would actively support a third force beyond the usual political suspects. Our strategic masterminds empowered newly politicized young people to shape political discourse in digital spaces by propagating ridiculous ideas like fifth generation warfare. In a classic case of blowback, it is precisely this youthful demographic, particularly in metropolitan Pakistan, that has turned generals on the generals it believes are responsible for removing Imran from power. There's a major sociological angle, which I don't think the army ever uh, thought बिल्कुल, will blow back against them. And we have to remember that Imran Khan has the charisma of the World Cup 1992, which एब्सोल्यूटली, which still holds the younger people in awe. Okay, and it is a story in itself that he brought Pakistan. Actually, if you go back to 92, Pakistan was out इट वाज़ because of आउट, some other rain-affected match. It came into the semi-finals, इट वाज़ and डाउन from एंड there आउट, it won. Huh? Yeah. इट वाज़ डाउन एंड आउट एंड ही Uh, फाइनली गॉट इट टू द फाइनल्स, yeah. So same story is being repeated. So he's got the popular imagination. Whether एब्सोल्यूटली, he is successful or not, we know how unsuccessful he'll be. That's a different story. टाइम विल टेल दैट, Yeah, time will tell. Okay, he says one need not be an expert to understand Pakistan's existing political economy. It is simply unsustainable. Land grabbers run riot. National security apparatus enjoys a separate existence to bloody civilians. Our economy is propped up by imperialist powers and unaccountable creditors, and hateful polarization is increasing. But there is one crisis which trumps all, and this is important, and this is the long term prognosis of ecological meltdown, right? A crisis that our own existing developmental regime is simply accelerating. So there's an issue of ecology at one stage, the economy is at one stage, both are on a meltdown. And all this story is happening in between, so Pakistan is in for real rough times. Now, Zahid Hussain, another op-ed, today's op-ed, he says it's in dawn, huge setback for the government and the security establishment. He says images of people ransacking the residence of a top regional commander and attacking military institutions in various parts of the country without resistance presented a picture of a fractured state. जो ही हम बात कर रहे हैं और उनका भी राय यही है. There was no move to stop the attackers as they ransacked the place. The security detail had simply disappeared. So that means even at the rank and file, there is देयर इज अ रिफ्ट, problem. ठीक है? The military later justified its inaction by saying it showed patience and restraint and exercised extreme tolerance, not even caring about its reputation and the larger interests of the country. But fact तो ये है कि इनका बोलबाला क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है. The civil administration seemed to have completely collapsed in the face of enraged mobs. ये भी सही बात है. Any move to disqualify the former prime minister or ban his party would be adding fuel to फ्यूल, fire. बिल्कुल, Okay, Mariam Nawaz says business as usual, no chance of emergency, but ये तो सवेरे की बात है, शाम को ये खबर आ रही है. इन्होंने शिरीन मजारी को भी अभी ले लिया into custody. Virtually the second run leadership, everyone in PTI is in custody. Of course, ये पुरानी बात है. Islamabad High Court issued stay order on criminal proceedings. Shahzad Chaudhry, Air Marshal Shahzad Chaudhry, has written in Tribune, the Pakistani society laggard for its own reason and driven by rhetoric and sentiment is an uncontrolled beast. So that's the point, uncontrolled beast हो गया ये अभी पूरा कहानी यहाँ. Okay, यहाँ कोई किसी को काबू में नहीं है जो beast they have made.
किसी ने बोला फ्रैंकेनस्टीन, किसी ने बोला अनकंट्रोल्ड बीस्ट। ये यूनिटी देखिए ऑफ थॉट उनके हाँ, अंदर। नमाम जू बन रहा है वहां पर। जू बन रहा है। जू बन रहा है। When restrained, they generate their own momentum. What they will burn and break is anyone's guess. Action begets reaction. Need is to break the cycle. In an economy where there is nothing being built, this is very stinging. There is little space for leveling what we have. मतलब कुछ साफ हो गया पूरा कहानी, क्या करेंगे आगे जाके ये। ओके, या योर व्यू। मेरा मेरा ये मानना है कि जो ये सिचुएशन अभी चल रही है, इसके बारे में खुद वहाँ के जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ये बोला है कि 1971 16 दिसंबर 1971 के बाद जिस दिन पूरा पाकिस्तान रोया था, लोगों ने घर में खाना नहीं बनाया था, चूल्हे नहीं जले थे, उसके बाद ये जो नेक्स्ट सिचुएशन जो आज हुई है, वो उसके बराबर है। तो अगर ये सिचुएशन उसके बराबर है उन्हीं की जुबानी में, in their own words, it means that has the reverse count of implosion of Pakistan started? I think should we have your views on this, because ये काफी लोगों के दिमाग में इस समय घूम रहा है कि क्या रिवर्स गिनती शुरू हो गई है, और अगर we'll just see the next thing and we'll talk about it. Okay. उसके बाद इसको निकाल देता हूँ। We'll now there is also this came 2 days back in Friday time. He says it's a direct military takeover likely in Pakistan. The last option. A military commander would not like to preside over an economic meltdown. It would be better that the winner is the next elections take the blame for a possible default on Pakistan's. He'll not own up the default. Absolutely. The next thing he says is the military commander would not find any international mentor which would be ready to foot the financial bill for his adventure. The last two takeovers, the financial bill for Ziaul Haq and Parvez Musharraf was footed by USA, अगर आपको याद है तो। Yes. उन्होंने पैसा दिया इन को, ठीक है? Okay. ये भी बोलता है कि best bet for our military brass will be to facilitate holding of fresh elections. Right? Pakistan cannot afford any kind of civil strife. Any confrontation between military and political forces would not only be suicide, it would lead to complete collapse. Okay? Military commanders should ensure that there is no confrontation between military and popular political forces. तो ये है इनकी नजरिया। सवाल बहुत हैं। बिल्कुल। Shoot and we'll discuss. तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे यही किया था कि इस समय जो इनकी हालत है, क्योंकि उन्होंने खुद ही इसको कंपेयर किया है 1971 16 दिसंबर 1971 से, उसका रीजन ये बता रहे हैं कि बिसाइड्स जो इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, ये अपनी जगह पे है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो इनका प्रॉब्लम है, जो आंतरिक इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो एक अपने आप में इनको कंगाली की तरफ ले जा रही है। तो क्या हम ये मान के चलें कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है इम्प्लोजन की, और अगर ये क्योंकि यहाँ आर्मी भी डिवाइड हो गई है, अगर कोर कमांडर्स ही सेम विकेट पर नहीं है तो नीचे भी डिवाइड होगी, यानी कि ब्रिगेडियर मेजर जनरल अभी कुछ लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, कई ऐसे होंगे जो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए होंगे, रैंक एंड फाइल में भी है। बिल्कुल। तो क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि अब जो है इनको प्रायोरिटी में सबसे पहले अपने जो आर्मी है, जो इनकी जो मेन स्टेबिलिटी फैक्टर है, उसी को इन हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा और उसके बाद कहीं कोई अगला स्टेप लें? मेरा ये मानना है कि ये समय ऐसा है जबकि इनकी उल्टी गिनती इम्प्लोजन की शुरू हो गई है, अनलेस एंड अनटिल दे इंटरवीन विथ स्पेसिफिक मेजर्स। व्हाट कुड बी दो स्पेसिफिक मेजर, दैट इज वी कैन डिस्कस, बट ये इम्प्लोजन के ऊपर जरा आपसे व्यूज चाहते हैं। आपने जो बोला है मैं भी मानता हूं, इनका इम्प्लोजन मेरे ख्याल में ये शुरू हो गया है। व्हाई? जैसे आर्मी में तो क्लियर दरार है, राइट? ओके, द पीडीएम कैन नॉट इम्पोज इमरजेंसी क्योंकि ऊपर प्रेसिडेंट बैठा है जो पीटीआई का है। इमरान खान को अंदर नहीं कर सकते हो, उसको बाहर जीने नहीं दे सकते, वो जीने नहीं देगा आपको।
और he will push for elections. अगर ये रहा तो इनका मुद्रास्फीति डाउन हो जाएगा ओवरनाइट, right? So there is no, and the economic problem is coming very fast at them. Economically they are in a ruin, politically they are in a ruin. और ये हमने पिछले महीने जब हमने बात किया था ऑन डिस्कशन पाकिस्तान, देखिए आपने, हमने और जनरल दुआ ने बात किया था वो, राइट? बिल्कुल हमने देखा था कि अगर पाकिस्तान की आर्मी के अंदर कुछ दरार हो गया तो पाकिस्तान का हालत गया। खत्म और हो गया। ऊपर देख रहे हो ये आज, इसीलिए मैंने वो दिखाया, ये जो अटैक ऑन इन बालूचिस्तान ऑफ टीटीपी, इसीलिए मैंने दिखाया आपको कि वो भी तो चल रहा है, वो तो कहीं गया नहीं, ठीक? बिल्कुल तो अगर ऐसा ही रवैया है तो देयर इज अ कोलैप्स, इफ देयर इज अ कोलैप्स इम्प्लोजन इज द नेक्स्ट स्टेप। ओके ओके, तो या ये आप बोलिए। कुछ नहीं, आप बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, मैं इसी से अगला सवाल आपसे ये लेना चाहता था कि अगर हम मान के चलते हैं कि ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर, द रिवर्स काउंट हैज स्टार्टेड या एंड वी आर समवेयर एट द बिगिनिंग ऑफ दैट रिवर्स काउंट, या ओके? या सो नाउ we are also seeing that in Pakistan there is a lack of leadership. There's a leadership deficiency which is occurring in Pakistan. Whether it is the army is becoming leaderless. I would say if 6 lieutenant generals, I yeah just saw it on the TV also. I mean, yeah our list has now flashed on the TV. It is oh good. coming on. We are It's ahead of coming the on. TV. We are Yeah, ahead yeah, of the TV. Good, yeah. good. So it's coming on the Republic TV, and the same list is flashing there, Yeah, right? okay. So the army somewhere is getting leaderless. I would put it that way. If people are refusing to follow Munir, army is becoming leaderless. So what are the options before Asim Munir? ये एक सवाल जो है हमारे को आंसर देगा कि इम्प्लोजन जल्दी होगा या तुरंत होगा या कैसे होगा। तो अब देखिए मुनीर के पास क्या ऑप्शंस है? देखिए मुनीर ऑप्शन seem to be getting marginalized. एक हद तक he can, if Imran Khan stays out and he cannot be put in, the Chief Justice of Pakistan is completely with the way he's going. Absolutely. Let's not say that he's with PTI or without otherwise, and he is virtually, पूरा जो judiciary है has taken a role now of doing the right thing. I mean, look, on all said and done, I grant that Chief Justice, he's got the judiciary to do the right thing. Okay, you can, to a large extent. He's become the most cohesive of all the elements. Oh yeah, right. And there is no government in Punjab. There is no government in Khyber Pakhtunkhwa also. Okay, and they're all this thing. So this is the chaos. If this chaos goes through, and the army can't control the situation, and the army doesn't seem to be interested in controlling the situation. That's the worrying question. Yeah. So then what happens? With the, if this 6 lieutenant generals, it becomes a bigger mass, right? If it becomes a bigger mass, they could ask Munir to resign. They could ask Munir to resign, and the the Chief of General Staff can take over the army. Yes. If that happens, I mean, then there's some stability, and that if Imran Khan gives tacit support to this whole story from outside, that is the, look, that has its own problems in the long run, but that's the only short run band-aid for this situation, that they force the elections. The new army chief says just hold the elections and whoever wins wins. One option. The second option is Asim Munir, looks in the mirror and says, I can do only this much and no more. He calls for elections. Okay. He says, okay, we've done what we have to do. We don't have faith in let's hold the elections. He has to see the writing on the wall. The Shahbaz Sharif and Bilawal Bhutto will not do. Bilawal Bhutto is actually playing a smart game. He'll jump into the other, he'll parachute into the other camp at the first opportunity. Yeah, PPP in any case has been doing this. They Yeah. have been partnering. They have been partnering. So if there is a thing, this is the only way I see things going. And
if not 3 months, 4 months, 5 months, I do see Imran coming into power if he's not assassinated. Okay. So there are people who are talking that Asim Munir, Asim Munir, might do release one of his 007 James Bonds to eliminate Imran. He's already got the second rung people of PTI inside the jails. Yeah. So make PTI leaderless. Make देखिए अगर PTI. ये आपकी बात समझ में आ गया, अगर इमरान को आज के दिन कोई असैसिनेट भी करेगा ना, दैट्स द फास्टर रूट फॉर इम्प्लोजन ऑफ पाकिस्तान. गुड. सो आपका कहने का मतलब ये है कि पॉपुलैरिटी, जो मेरा अगला सवाल था, कि क्या कहीं आर्मी का बच्चा जिसको कि उंगली पकड़ करके इन्होंने गद्दी पे बिठाया था, आज उनका बाप बन गया है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान. ये तो हो गया, उसी ने तो बोला है, वही तो जाहिद हुसैन और आसिम सजीद बोल रहे हैं कि इसने फ्रैंकेनस्टीन बनाया. बिल्कुल. इसी ने तो क्रिएट किया. अगर वो फ्रैंकेनस्टीन अब बन गया है, नाउ अब अज्यूम कर लेते हैं कि इमरान खान हैज बिकम द फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर फॉर द पॉलिटी ऑफ पाकिस्तान, फॉर द पॉलिटी ऑफ पाकिस्तान. Assassination, you are saying, is out of the book. So the it's out of the book. It can happen still, huh? It can happen, but what I'm saying is that it is out of the book from their perspective, from the perspective I agree with you. From a rational leader like Munir or Shahbaz Sharif, etc. They may not. They would definitely at least have the sense to look 2 to 3 days beyond. I'm not even talking of 1 year or 2 year beyond. At least 3 to 4 days beyond that. What kind of situation may happen in Pakistan? Other than elections, then, can a new leadership emerge in the army or in the polity other than Shahbaz and Imran, and in this side Munir? Is there Shamshad Mirza can come up? Absolutely. But Shamshad Mirza was already working towards becoming the chief. Yeah, he'll become. Shamshad Mirza was already working towards becoming the chief. So his propping up may be on the cards, but how will it happen? That is the question which I want to ask. Okay, that's a very interesting question which you asked. The only way that can happen is that president comes into play now. देखिए, president is alwi. Okay. So the logically जिस तरीके से ये चल रहा है, these chaps will try to go to him with an emergency declaration, which he'll say no. He'll make some statement, or there might be a fresh round of violence somewhere. This has to happen. It will not happen so simply. ये नहीं कि just because Imran Khan has not been given, not been put in. There has to be a trigger. There has to be a trigger. There has to be a trigger. And the trigger will come. See, one is, be rest assured, they will not stop in an attempt to put Imran Khan behind bars. Bilkul. Okay. You'll agree with me, even the parliament has the power to arrest a chap. Correct. And today that parliament doesn't have opposition. Bilkul. So the parliament has the power to arrest a person, and it has the power to make law. So then judiciary is bound. So they can. That is the only way they can, try and do something. If that happens, and anger goes up in the public, and if Imran Khan, who seems to have the नस है उसका पाकिस्तान आवाम के ऊपर, वो भड़का सकता है सबको, और things might go out of spiral. अगर वो spiral के बाहर निकल गया, तो तब जाके, right, then there will be a thing that there will be internal pressure in the army. अगर आर्मी में कुछ और व्याख्या आए हैं of, I won't say mutiny, of disobedience X, Y, Z, then there might be internal pressure to tell Munir, you please sidestep. So आप ये कह रहे हैं कि इस समय जो सोल्यूशन नजर आ रहा है, या तो इलेक्शन है,
जिससे कि सिचुएशन कंट्रोल में लाई जा सकती है, करेक्ट। या फिर कोई पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है जिसके हाँ, थ्रू ऑर्केस्ट्रेशन किया जा सकता है। या मतलब पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन के तहत कुछ हो सकता है, कुछ कुछ ऑर्केस्ट्रेशन कर सकते हैं। कर अब सकते यहाँ हैं। मैं तीसरा एंगल डाल रहा हूँ आपको। ओके। चाइना और यूएस, उनका इंटरेस्ट यहाँ बहुत बड़ा है। चाइना का सबसे चाइना का ज्यादा, खास करके, और यूएस का उसके बाद। यूएस का भी इंटरेस्ट इस या दोनों का इंटरेस्ट है, कंट्री में है। बिकॉज इट्स अ बैटल ग्राउंड स्टेट। It's a battleground state, which we discussed या in या the previous discussions which we had. या Now, how do you think China is going to manage the situation? Do you see the hand of China in the release of Imran Khan? देखिए, High Court. नहीं, बात यह है कि आई सी चाइना's hand in putting him behind bars actually. Is it because judiciary becoming so strong? That is a question which has been bugging me. How Yeah, come the judiciary has become so strong that people are listening to it, you see, the point especially is people this. with the power? Yeah, you have a point when you say is China behind this thing, but China or बात the ये, US? I don't know between the no, two of them. देखिए, when was Imran Khan put behind bars? 2 days after that foreign minister came and he said कि भाई stability वगैरह चाहिए तो उसको अंदर कर दिया। तो इन्होंने उसी वक्त मैंने बोला था कि इनका बातचीत हुआ होगा, इसी उसके बाद इसको अंदर कर दिया, और इन्होंने यूएस को भी बोला होगा, पर यूएस ने देखा होगा कि ये भाई ये मामला कुछ प्रॉब्लम ही हो रहा है। तो आई हैव अ फीलिंग दैट द यूएस मस्ट हैव कम थ्रू Saudis or someone and told, given this thing कि भाई take it easy. ओके, सो कहीं ये भी तो नहीं हो सकता है कि चाइना ने ये सजेस्ट किया कि आप इनको स्टेबिलिटी के लिए अरेस्ट करिए, और या जब देखा कि सिचुएशन हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, तब उन्होंने बोला प्लीज रिट्रैक्ट। देखिए, बात यह है कि यू I have my doubts about China. I'll tell you why. ओके, I mean, let me sidetrack. I'll go off track because unless we go off track, you'll not understand China's role. Today, I read an article of Carnegie Endowment, right, in which they made an analysis of China's role in the Middle East in brokering the deal between Iran ईरान एंड सऊदी Iran अरब। and Saudi, because China is making a big deal of it. And 4 people, including Bilari Kausikan and someone from Indonesia, someone from 2-3 other countries, have analyzed this. It's a very interesting thing. And what they have said is that China has been an economic power and it has had economic dealings with everyone, but it has not been successful in having political dealings or military dealings or security dealings. Yes, In that, it has not been successful. correct. They say that the success of China in this Iran-Saudi deal was because of the fact US could not have done the deal due to its opposition to Iran, and Russia was in its own crisis with Ukraine, so they had no other choice but to go to China, and both China. Iran and Saudi had economic interests with China. So this deal came largely through economic interests. इसमें क्या है? The Chinese are not that good at this kind of maneuvering, because they don't understand democracy. They don't understand many things which That is where I suspect the US. No, I have no doubt. That's where I suspect the US. No. China might have pushed these people into this stupidity. The US must have come back and said, lay off. Rectified the errors which Rectified, they have. error. But the So, point is, देखिए, I don't know whether ये अगर आप बोल सकते हो कि rectification of an error, अगर आप ये इमरान खान को कल खड़ा कर दोगे, he himself is a big error. वो अलग बात है. हमने देखिए, वही तो this is a very surprising thing that a leader who when he was the prime minister was at his nadir as far as popularity was concerned, and suddenly when he goes out of the chair, his popularity has risen so high.
No, Yes, I agree. people are at times worrying. In fact, there are questions which are coming to me from my friends and other people. They are saying, ये "How देखिए, are you managing? How has this happened? How yeah, has the?" but it is he's caught the popular imagination. He's played the victimhood. He's played the born again Muslim. He's played Correct. the hero. He's played everything He's played the victim card very, very very deftly. well. And he's also said कि भाई वो क्या बोलते फॉरेन गवर्नमेंट है ये, राइट, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, ये चोर हैं, ये सब ये देखिए, आफ्टर ऑल ही वाज द वन हु वाज इंस्ट्रूमेंटल in this thing, and that's what we also said, that he's a creation of the Pakistan army. यही हमने वो एनालिसिस, पाकिस्तानी एनालिसिस में भी दिखाया आपको. तो ये Correct. है, this is where it is. Okay, So, I don't okay. so, so, So uh, so, how do you think now US and China are going to proceed ahead as far as this battleground state is concerned? We can see, take first the US and then the Chinese. okay, see, both, what are their interests in Pakistan? We should be clear कि इनका इंटरेस्ट क्या है पाकिस्तान के अंदर. बिल्कुल, बिल्कुल. चाइना का इंटरेस्ट है सीपीसी को बचाना, और जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उनको ग्वादर चाहिए, उनको दे वांट टू रीच इनटू इंडियन ओशन, And also अफगानिस्तान. Yeah, Afghanistan come, I think, more into the Indian Ocean, so that Djibouti and Gwadar, they control the larger maritime thing. अफगानिस्तान And यूगर्स के लिए वो अफगानिस्तान में अपना yeah. Then, for my internal viewpoint, they don't want the overflow of the whole thing going into Xinjiang. They have their intimate interests, right? So they need a stable Pakistan for that. And after all, Pakistan is their ally, iron brother. Higher than Himalayas, deeper than the oceans, and they need Pakistan to counter India. India के against काम करने के लिए उनको पाकिस्तान चाहिए. पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंस है चाइना के लिए बहुत बहुत ही हाई है, बहुत हाई है, पर बहुत हाई है, राइट. अगर पाकिस्तान लुढ़क गया तो चाइना का पूरा खेल लुढ़क जाएगा. बिल्कुल, ठीक है. तो उनका ये इंटरेस्ट है, पर क्या ये उसको संभाल पा रहे हैं इस हालत में? ये इसीलिए संभाल नहीं पाएंगे, ये चाइना के बाहर है, क्योंकि ये जो इस टाइप का सिचुएशन उनके लिए बिल्कुल नया है. वो उनको कोई एक्सपीरियंस, इसीलिए मैं वो ईरान सऊदी डील के बारे में आपका बात किया, और इनका इनएक्सपीरियंस, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा तो विचार है ही, पर इसके अलावा 4 इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने एग्जामिन किया ये. नहीं, वो बात सब बिल्कुल समझ आ रही है कि व्यापारी हैं वो. हाँ, वो ठीक है. ये और ये देखिए, म्यांमार में भी ये कोई समझौता नहीं कर पा रहे हैं. म्यांमार तो इनका बगल का देश है, वहां भी प्रॉब्लम है. तो इनकी बस की बात नहीं है ये प्रॉब्लम सुलझाना. अगर किसी की बस की बात है इस प्रॉब्लम को सुलझाना, वो है यूएसए. क्यों? यूएसए नोज पाकिस्तान वेल. उनके एसेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, अभी भी हैं, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं विद यूएसए. इनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, इनके पैसा है, इनका पापा जॉन्स है, सब कुछ है उधर. बिल्कुल, है ना. पॉलिटिकली दे आर मोर कनेक्टेड. इनके लॉबी है वहां, पाकिस्तान के लॉबी है वहां यूएसए के अंदर. तो इनका वो जो कनेक्शन है, इनका अम्बिलिकल कनेक्शन विद यूएसए इज मोर. तो एंड ये इस मामले में यूएसए हैज हैड एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग सच सिचुएशंस, चाहे वो ईरान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, या इनका ये जो पॉलिटिकल इनका जो होल स्टोरी, और इनको पता है किस तरीके से ये डिक्टेटरशिप से बात करना, क्योंकि ये यूएसए कितने दिन से डिक्टेटरशिप ही बात करता आया है, और ये देखा भी गया है कि इट इज इजी टू डील विद डिक्टेटर्स, राइट. तो हाँ, उनको पता है. एंड उनको एक और है प्रॉब्लम कि कहीं ये प्रॉब्लम हो जाए तो एक न्यूक्लियर डिवाइस विद अ बैकपैक गोज इनटू द वेस्ट और यूएसए, तो उनका सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है. So they have to deal with Pakistan and prevent a collapse. So कहीं ना कहीं हम फिर दोबारा उसी बात पे आ रहे हैं जो हम अभी तक डिस्कस करते रहे हैं कि ये लिक्विड ऑक्सीजन में ही रहेगा. यानी कि इसको
इम्प्लोजन से अगर कोई बचाएगा, और मुझे लगता है रास्ता ये होगा, ये मेरी आपसे डिस्कशन के बाद एक निचोड़ निकल के ये आ रहा है कि शायद अमेरिका पुश करेगा जुडिशरी और मुनीर के थ्रू टू गो फॉर अर्ली इलेक्शंस, एटलीस्ट देखिए फॉर पंजाब, एटलीस्ट फॉर पंजाब. नहीं नहीं, क्यों पंजाब, इवन खैबर पख्तूनख्वा साथ ही है। I'm just saying in phases. Let's say they don't नहीं, have the money, etc. देखिए Okay, बात go यह for है कि Punjab, follow it for KPK. देखिए वो हो नहीं सकता, इसीलिए क्योंकि इमरान खान को रिहा कर दिया और वो एक पॉलिटिकल फोर्स है, वो ही विल नॉट अलाउ जस्ट 2 इलेक्शंस टू गो थ्रू। सो जी, ये देख, इन यूएसए कुछ भी बोले, कुछ भी ट्राई करे, राइट, इवन इफ असीम मुनीर अगर थोड़ा बैक ट्रैक भी कर ले और पीछे भी हट जाए और बोले अच्छी ठीक है अपना वो कर लेते हैं, फिर भी उतना आसान नहीं होगा, राइट। क्योंकि हाँ, क्योंकि अभी अभी एक न्यूज आई है डॉन हाँ, में, वो बोलती है कि चीफ जस्टिस मिस्टर बंडियाल led a bench to take up ECP's plea, Election Commissioner Pakistan's हाँ, plea, तो होल्ड इट, seeking review of Punjab pause orders on a Monday. क्या तो ये ये कहीं प्रेशर वर्क कर रहा है, मुझे लग रहा है नहीं नहीं कि नहीं, कहीं इसमें प्रेशर वर्क कर रहा है. देखिए इसमें तो डाउट नहीं है। सीजीपी ने क्या बोला था, सीजेपी ने उसने बोला था कि भाई 15 तारीख तक कर लो, वो तो 15 तारीख तो हो नहीं सकता। तो अभी जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं, वो तो बोलेगा ठीक है 15 नहीं तो 20 को कर लो, 20 नहीं तो 30 को कर लो, अगर 30 को ही कर लो तो पूरा देश का क्यों नहीं कर सकते हो, राइट। सो ये कुछ तो देखिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अर्ली इलेक्शन, इनका जो शॉर्ट टर्म समाधान है अर्ली इलेक्शंस, बिल्कुल ठीक है ना, और कोई रास्ता नहीं है, नजर नहीं राइट। आ रहा. हाँ, मेरे को तो नजर नहीं आ रहा। तो ये बिल्कुल जिस जिस तरीके से वहां जाएंगे, वो इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर्स की, जिस तरीके से दे प्ले इट आउट। अगर इनकी अकल है तो ये जो आसिम मुनीर को अगर आज भी अकल आ गया, तो ही शुड आल्सो गो टू सीजीपीएन से भाई इलेक्शंस करा देता हूँ, मैं करा दूंगा सबके लिए, उसका भी बचाव उसी में है। मुझे मुझे तो लग रहा है कि जो जिस तरह से हम डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ। हमें कुछ अगर देना है पाकिस्तान को, तो शायद थोड़ा अकल दे सकते हैं, क्योंकि क्योंकि हम हर बार यही बात कर रहे हैं कि दिस थॉट मस्ट कम इन देयर माइंड दैट there is enough and now they have to look for some constructive solution to ensuring stability in Pakistan, because that is my last and the final question जो आपसे है. नहीं देखिए, ये देखिए इसमें यही है, the best bet for our military brass will be to facilitate the holding of fresh parliamentary elections and make sure that power is बिल्कुल handed over to the winner. बिल्कुल Doesn't बिल्कुल matter who wins. ये बिल्कुल इन्हीं देखिए, ये आप और हम तो बाहर बैठकर इसका विश्लेषण कर रहे हैं, इनके खुद के सोच विचार करने वाले यही बोल रहे हैं। और ये लेकिन जो फ्राइडे, ये नजम सेठी का फ्राइडे टाइम्स में ये निकला है ये आर्टिकल। हाँ, लेकिन इनकी सुनता कौन है ना, इनके ऑप एड्स को नहीं, ऐसी वो बात वाली नहीं बात. है। नहीं, आप भले ही आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, पर देखिए द लेवल हेडेड वे ऑफ गोइंग थिंग्स इज दिस, इलेक्शन कर लो। There is no denial in what has been या written in the by these two या authors. या या Journalist is absolutely perfectly true. That is the only way in which या Pakistan can possibly resurrect itself. So my last and the final question. Thereafter, we And can just have a thank yeah, before you this thing, we'll thank Jyoteshwar Mishra, thank and you. we'll thank him, and we also thank Rupa Rao. Thanks a lot, Rupa. Wow, wow, Right? very. Uh, I think we're so getting some generous very of you. good responses. Very Yeah, good responses. Thank you. yeah. Uh, Thank so you. that is after this. Let's now we have identified the solutions. We Yeah, know what can best be done. We yeah, also know that there could be a reverse count towards implosion, yeah. which is something even India would not desire at this stage, Correct. right? Because there are implications for that. Yeah, yeah, yeah. But I want to just generate the last and a very interesting scenario. हाँ, Let बोलिए us see. बोलिए। Let us see how you respond to it. It's a hypothetical question which I am posing to you. POK breaks up. Okay. What are the options for India? A. I'm giving you the options also. A. Assimilate into India. B. Independent existence. And C. A union territory of India with special status. Okay. So these So are
some of the options, but you could have the fourth or the fifth option also. No, first, well, मैं ये पहले हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा किस तरीके से ये ब्रेकअप होगा, क्यों होगा ये ब्रेकअप। अगर अब ब्रेकअप होगा तो क्यों होगा? ये ब्रेकअप तभी हो सकता है अगर जनरली और कहीं डिसइंटीग्रेशन हो, क्योंकि आप देखिए आज के दिन गिलगिट बाल्टिस्तान में ये मांग है कि मेक अस अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. They are seeking provincial status and not to be ruled under the constitution directly. This is the present arrangement, and there is no movement to say that we want independence in Gilgit-Baltistan. Absolutely. Okay. Yeah. कुछ चुटपुट है, कुछ there is some resistance for damn sham and Chinese thing, but कोई mass movement नहीं है. कोई mass movement नहीं है, आपकी बात सही है. वही आप पीओके में आइए, वहां भी कोई मास मूवमेंट नहीं है. चुटपुट ये तो हम सुनते रहते हैं, मुजफ्फराबाद में कोई प्रदर्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट राइट. क्योंकि पीओके में अगर हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल में ये दोनों जगह अभी as of today they got different characteristics altogether. Okay, so we have to deal with them separately. बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं. मैंने इसीलिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा था. नहीं, ठीक है, कोई नहीं. आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई पूछता है कि सर हम पीओके ले लें, पीओके ले लें. पीओके कैसे लोगे भाई? पीओके लेने के लिए कोई हालात होना चाहिए ना. यही बात है, आपका हाइपोथेटिकल केस में भी हालात है क्या पहले वो है, राइट. सो पीओके फर्स्टली अगर बिछड़ जाए पाकिस्तान से तो पाकिस्तान में दरार और पड़ना चाहिए, और पाकिस्तान का हालत इतना बुरा होना चाहिए कि वो पीओके को छोड़ दें अपने आप. हमारे पास कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, उसके लिए मेरे ख्याल में वो नौबत नहीं आया है. ओके, अगर नौबत आ भी गया, मान लो कि दरार आ गया और पाकिस्तान 3-4 हिस्सों में बंट गया, ठीक है, फिर तो आप ये 2 हिस्से जो हैं वो किसी के नहीं होंगे, ये लावारिस घूमते रहेंगे. बिल्कुल, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसीलिए मैंने एक सवाल किया है, क्योंकि लोग आज भी जो टीवी पे बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपीके की. ये 4 हिस्सों की बात कर रहे थे. पीओके और गिलगिट को लोग भूल गए थे. नहीं, देखिए, अगर वो हालत हो गया, देखिए पहले तो मेरा सोच विचार ये है कि सिंध और पाकिस्तान टूटेगा नहीं, राइट. भले ही अगर क्यों, बिकॉज दे हैव इंडस. सिंध और पंजाब नहीं टूटेगा. तो केपीके और बलूचिस्तान टूट सकता है, क्योंकि वहां से अफगानिस्तान से इनका जो प्रोजेक्शन है और ड्यूरेंट लाइन पॉलिटिक्स के ऊपर और उसके विचार पे टूट सकता है. पर वो भी मुश्किल है, क्योंकि इकोनॉमिकली दे आर नॉट वायबल, एंड पॉलिटिकली देयर इज अ रीजन, पर उनका आबादी इतना कम है और उनका डिपेंडेंस इस दर ज्यादा है, और राइट. सो वो भी मुश्किल है, पर हो सकता है तो वही हो सकता है. बिल्कुल, अगर वो हो और उसके तहत अपना जीबी और पीओके बिछड़ भी गए तो आप क्या करोगे? फिर तो आपको क्या है, आप वॉक इनटू इट. यस, सो दैट वाज द क्वेश्चन. सो आई वाज लुकिंग एट, वंस यू वॉक इन, देखिए आपको ये भी देखना है कि हम जम्मू और कश्मीर को संभाल रहे हैं पिछले कई सालों से, ठीक है. या उसको भी संभालना, तो इतना बड़ा और आएगा आपको संभालने के लिए. वो एक चैलेंज होगा भारत के लिए. मेरा कहने का मतलब है, नहीं, आपने जो सवाल उठाया है वो बहुत अहम है. इसमें एक बड़ा सीख है. इसमें एक्चुअली देयर इज अ पॉइंटर, और जिसके बारे में मैं पिछले 2 साल से बात करता आया हूँ. सबसे पहले, अगर आप चाहते हो कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके अगर मौका जब मिले आपके हिस्से बने, और ये ना हो कि वो भी अपने इंडिपेंडेंट स्टेटस झंडा खड़ा करे, तो आपको पॉलिटिकल आउटरीच होना चाहिए. वहां
अगर पॉलिटिकल आउटरीच अगर आप शुरू करोगे आज और उसको बोलोगे कि भाई पाकिस्तान टूट रहा है, जिस दिन पाकिस्तान टूटेगा आप हमारे साथ आ जाओ, उनको एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव तो दीजिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। ये हमारे यहाँ लैकिंग है। इस समय मैंने एक लैकिंग चीज़ है, देखी। हम सोच विचार लैकिंग है, क्योंकि हम सब बोलते हैं पीओके का मिलिट्री ले लो। मिलिट्री लो कैसे लोगे भाई? सबसे बिल्कुल सही। बेवकूफी होगा मिलिट्री हिसाब से लोगे तो। सॉफ्ट पावर हम डेवलप ही नहीं कर रहे हैं, नहीं, जो हाँ, जो कि उसको अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि हम उधर जाने की बात कर रहे हैं, उधर से आने की बात कर रहे हैं। हमें हमें अपना हाथ उधर बढ़ाने की बात कर ही नहीं रहे हम। तो जब देखिए तक हम उनको, अपना हाथ उधर नहीं बढ़ाएँगे, मेरे ख्याल से कोई आपकी तरफ झुकेगा नहीं। अगर आप देखिए हाथ नीचे करोगे तभी तो पकड़ेगा कोई हाथ आपका। बिल्कुल सही बोला आपने। दे हैव टू कम टू यू एंड से कि भाई हमें शरीक कर लो। बिल्कुल, अगर वो न वो उसके लिए वी हैव टू गिव देम एड। इनके जो ओवरसीज सिटीजन है उनको मदद करो, उनको पॉलिटिकल आउटरीच करो, इंटरनेशनल फोरम में जाके बात करो। ये एक बिल्कुल। एक छोटा मुद्दा उदाहरण देता हूँ। जैसे चाइना, अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज नाम दे रहे हैं कुछ जगह पे, आप भी दे दो, शुरू करो वो कहानी। मैं आप बात करना शुरू करो उनको लीडर्स के साथ। बिल्कुल सही बोला आपने, और मेरे ख्याल से व्यूअर्स को हमारे ये समझना चाहिए कि खाली मिलिट्री ऑप्शन नहीं होता है। हमारे को अभी से तैयारी करेंगे तो 10 साल 15 साल के बाद शायद हो चा, सकता है। यहाँ चाइना से कुछ सीख लेनी चाहिए हमको। हाँ, तो उनको वीसा दे दो, वीसा दे दो, बिल्कुल उनको कुछ तो दे दो। बिल्कुल आप बिल्कुल। गए होंगे तुर्तुक, आपको याद है तुर्तुक? आप गए होंगे तुर्तुक, जो अपने सियाचिन 102 ब्रिगेड में है हाँ हाँ, वो। गया हूँ हाँ, गया हूँ। अभी आपको याद होगा तुर्तुक विलेज जो है वो एक्चुअली पहले पाकिस्तान में था। 71 के लड़ाई के बाद हमारे पास आ गया। बिल्कुल। पहले वो तुर्तुक क्या था, वो हमारे अगेंस्ट था, क्योंकि उनके निवासी ज्यादातर पाकिस्तान के बारे में सोचते थे। ये मैं पुरानी बात कर रहा लिंकेज ज्यादा उधर थी। हूँ, उधर था। पर क्या है, धीरे धीरे हमने उनको लुभाया है। किस तरीके से लुभाया? उनको हज भेजा, उनको मेडिसिन दिया, उनको कुछ ना बिल्कुल कुछ दिया, उनको कुछ बिल्कुल फैसिलिटीज दिए, उनको बिल्कुल। डेवलपमेंट वहां तक पहुंचाया, रोड वहां तक गए, फौज उनका इकोनॉमी में शरीक हुआ। वो आज जो है तुर्तुक में वो एक मैं 10 साल पहले की बात है, जब मैं गया था तो उनका जो हेडमैन है वो बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत माना हुआ था, सब उसको प्यार करते थे। मैंने पूछा क्यों प्यार करते हो उसको? कहता साहब ये हमारे पूरे गांव में ये एक अकेला हज्जी है, और ये हाँ, हज्जी इसीलिए हुआ क्योंकि ये आ गया। भारत भारत के गवर्नमेंट ने भेजा, पाकिस्तान ने नहीं भेजा। 75 साल से, मतलब 50 साल से। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे चीज बहुत अहम होते हैं कि जब तक आप इनको, इफ यू डू नॉट हैव एन आउटरीच इनटू गिलगिट बाल्टिस्तान एंड पीओके, आपको कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है? I think sir, we have had a very interesting discussion. We can take some questions if there are Yeah, we'll any. take some questions because there are a lot of questions, a lot of interest. But I'll not take all questions क्योंकि Yeah, कल just ओपन any, सेशन लिया था, दो चार हाँ, लेसन, we'll take कई some. तो कवर हो गए होंगे, कई तो कवर हो गए होंगे। Yeah, I agree with you. ओके, देखते हैं। ये श्रुतिक कोतारी का है। हाउ हैज द जुडिशरी मैनेज टू ओवररूल द आर्मी हियर? Isn't the army the de facto judge, jury, executioner, government, and army in Pakistan? Is this situation a smoke screen for a purge by Munir? Yeah, अब your view, Dushi. इस यही मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा था, ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था कि हाउ कम जुडिशरी हैज बिकम सो पावरफुल दैट इट इज डिक्टेटिंग सम टर्म्स। आई आई हैव अ फीलिंग दैट, मेरा जो ये मानना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी की पॉपुलैरिटी में देश के अंदर कमी आई है। Yeah, पहला रीजन तो ये है। दूसरी बात है, पाकिस्तान आर्मी की जो स्ट्रेंथ है इस समय कम हो गई है इंटरनली। जो कोहिजन होता है पाकिस्तान वो आर्मी का, खत्म हो गया। वो खत्म हो गया है। और ये बात वहाँ की जुडिशरी को भी पता है। और मैं कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से इंटरेक्ट कर रहा था किसी और चैनल पर, और वो बता रहे थे कि सर, ये पूरी की पूरी जो पॉपुलैरिटी स्विंग हुई है फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी टू इमरान इमरान खान। खान। और इमरान जो करंट चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का,
वो इमरान खान द्वारा अपॉइंट किया गया था। बल्क ऑफ द जजेस जो हाई कोर्ट के हैं वो भी उसी के टाइम के दौरान अपॉइंट किए गए थे। तो मिस्टर बडियाल ने एक अपनी कोहेसिव टीम बना ली है हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, जो कि एक ही तरह की डिसीजन दे रही है। आपने देखा होगा उन्होंने इस तरह से डिसीजन दी है कि पाकिस्तान आर्मी के पर काट दिए उन्होंने। या कल पुलिस बाहर बाहर फवाद चौधरी को जब बचना था, वो सीधे जाके कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, पाकिस्तान चीफ जस्टिस के पास। वहां उसने अपनी पिटीशन डाली और बैठा रहा, तभी बाहर निकला जब उसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला कि अब आप जाइए, अब आप अरेस्ट हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद वो बाहर आया, पुलिस अंदर नहीं गई उसको अरेस्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी का कमजोर होना, इमरान खान की पॉपुलैरिटी, और तीसरा जो एंगल जो मैं इसमें कहीं देख रहा हूं, मैं शायद उससे आप इत्तेफाक न रखते हो, वो ये है कि देयर इज अ एक्सटर्नल सपोर्ट which is being given to this organization or this particular branch of the country. आई थिंक अमेरिका द्वारा कुछ इसको प्रॉप अप किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक बैकिंग है इनके पास, जिसकी वजह से जो आर्मी की जो वो थी, सुप्रीमेसी थी, क्वेश्चन पे आ गई है। इसमें डाउट नहीं है, राइट। आई तो थिंक इज अ वेरी फेयर थिंग। इमरान वाज नॉट, नहीं ये एक और है, सॉरी, we'll ask Shivender Singh. Sir, do you think that the timing of arrest of Imran Khan by the army with the economic turmoil in Pakistan was right? Yeah, he's Brigadier Shivender Singh. He's my brother-in-law. Very nice. So you He must ask him. You must answer that. he stays Yeah, in Brigadier. Bhopal. Can you just flash the question again, sir? Yeah. Sir, do you think the timing of the arrest of Imran by the army with the economic turmoil in Pakistan was right? I don't think they did this in a hurry, because they were somehow getting this feeling that Imran Khan is becoming too big in the country and his charisma has to be negated. आप ध्यान देंगे, अगर जो भी करिज्मेटिक लीडर होता है उसके एक कई फायदे भी हैं और कई नुकसान भी हैं। आप पेरू में देखिए गुजमैन, वो इतना करिज्मेटिक था कि उसको बदनाम करके एलिमिनेट किया गया, तब जाकर के वो पेरू को दोबारा ट्रैक पे ला सके। नहीं तो गुजमैन वाज लार्जर देन लाइफ। कहीं उसी तरह का उसी तरह से कर्डिस्तान का जो था एक लीडर था, उसको भी उन्होंने फाइनली इसी तरह से एलिमिनेट किया। तो कैरिज्मेटिक लीडर को रास्ते से निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो उसको बदनाम कर दो। तो 148 केसेस ठोके गए उसके अगेंस्ट, 148 cases were slapped against Imran Khan. Some genuine, some not genuine. Why I'm saying some genuine, some not genuine is because all the politicians in Pakistan Have the are same cases. हमाम में सभी नंगे हैं। That's the point which I'm trying to get. So that was one. That is putting his reputation under a cloud. So charisma कम होगा. Second is eliminating him. Elimination in the current scenario with the information domain being so strong is generally now avoided. So what they wanted to do was somehow put him in the jail, get him out of the election scene. If he gets punishment for Tosha Khana case, he'll be disqualified for standing for election. So वो तो these were अभी the होगा नहीं। so these were the two aims, I think, for arresting Imran Khan in a hurry, so that even if the Chief Justice gives a decision, doesn't agree to the plea of ECP, they would carry out the election without Imran Khan in the fray for election of Punjab, KPK, and the country. I think that's the short, I agree with you. Sweet answer to that. Okay, Imran Khan Nazi is known to take a lot of U-turns. Do you think he will cut a deal again with the army and settle his differences with the US playing the mediator role? I think they've all gone too far. I have a small variation to this. I think let's put it, with Mirza, probably this can happen. Yeah, I think you hit the nail on the head. Yeah. मुनीर से नहीं होगा, मुनीर और ये दोनों they don't see eye to eye. Yeah, इसमें डाउट नहीं है। इसीलिए तो ISI चीफ था, इसको निकाल दिया गया था। बिल्कुल, ठीक है ना। तो मुनीर के साथ तो नहीं होगा, लेकिन शमशाद मिर्जा के साथ हो सकता है। US मीडिएटर रोल मुश्किल है इसको करने के लिए, US केपेबल है इसको करने के लिए।
It has the clout. Yeah, right. Okay. Uh, right. एक और है. Can the current situation lead to significant reduction in the influence by the army over the administration? So you can answer this, sir. It's a short या and sweet answer. ऐसे ही भी खत्म हो गया इनका. ठीक बिल्कुल, है ना. बिल्कुल। और अगर इमरान खान आ गया तो तो देखिए राहत एक साहब चीज है, अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गया, जो इंडिकेशंस आर कि ये बन जाएगा, अगर कुछ और ना हो तो इस वक्त की बात है मेरी तरफ से, अगर ये आ गया तो पाकिस्तान आर्मी में काफी बदलाव होगा. बिल्कुल. राइट. Pakistan army will not be the same army which we have known it for so long. Okay. Then right. Okay. Ask generals what are the foreseeable implications of the civil unrest on Pakistani institutions abroad. Pakistani institutions abroad, in the sense, what kind of institute? They got embassies abroad. Other than that, Their organizations, their lobbying institutions, their I mean, those are all very, very small entities, yeah, and I don't think they really bother so much about the internal situation of Pakistan. They get paid. All yeah, these lobbyists, they are on the payroll, and they do what they are told to do. Uh, Pakistani institutions, rather than this, I would say, what would be the fate of Pakistan in bodies like OIC, relations with the West Asian countries? That is where we need to keep a watch. How are they going to react to a situation? Because to me, it looks like Pakistan is becoming a banana republic, yeah. Only without a banana. only without a banana. Because banana republic is set generally for the African countries. So I just simulated. I mean, the way things are happening, it appears to be that way. Yeah, I agree with you. Yeah, completely. Okay. Uh, if Pak implosion is imminent, what will happen to its nuclear arsenal? Don't Yeah, answer this, Dushyant, yeah, because Brigadier Shivandar, I would like to tell you tomorrow I'm going to do a complete program, same time, 8 to 9, on the nuclear dynamics of a imploding Pakistan yeah. with General P.R. Kumar. We are focusing on these questions. Join in. Because that's going to be a very, very interesting discussion and where how to handle this whole story. So we're going to play the worst case scenario out कि अगर कल के दिन पाकिस्तान लुढ़क गया और बिखर गया और वो हालत बहुत खराब हो गया तो क्या होगा एंड हाउ डू यू हैंडल दिस न्यूक्लियर स्टेट. कल बात करेंगे हम. आप कल तक वेट कीजिए, कल आ जाइए वापस. राइट. हम ओके बात ये लेंगे. आस्क political violence, ethnic conflict, economic collapse, and institutional breakdown. Won't the feed fodder to the extremists in the population? Of course it will. Sure, इसमें absolutely, दो it's a radicalized population. We have not spoken of that. इसीलिए absolutely. मैंने आज एक वीडियो जारी किया था जो मैंने मिस्टर संजय दीक्षित के साथ किया था ऑन रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान. उसको Pakistan. एडिट करके मैंने आउट किया. आप पढ़ देखिए उसको. देयर आर मेजर इश्यूज. वो कहानी तो अभी तक वो उभर के नहीं आया. अभी वो उसका आएगा. उसका एक कार्टून है. हाँ. उसका एक कार्टून आया हुआ है कि दे आर बीटिंग इन द विंग्स. एंड या इन वो इन दवाइयों में कितने उनके एलिमेंट से क्या पता किसी को. या रैंडम हिट तो ये भी बोलता है if Pakistan is imploding, what is India going to do about Pakistani nukes? We'll do it later. Tomorrow, कल. Yeah, we'll do it. And या ज्योतिश्वर मिश्रा हिंदी में एक बोलता है सर पीओके के आंदोलनकारी अमजद अयूब मिर्जा के दावे में आपको कितना दम लगता है जिन्होंने पाकिस्तानी सेना की को उधर का कश्मीर छोड़ने के लिए 22 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई. देखिए मैं कल ही था ये अयूब मिर्जा का साथ एक डीडी पैनल में
वो बहुत भावुक है। जो आदमी भावुक होता है वो उसका सोच विचार थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है। वो एक एक्टिविस्ट है, वो कुछ भी बोल सकता है। हम जो है ना ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक, हम थोड़ा परख के बोलेंगे, परख के, थोड़ा सावधानी परख के बोलेंगे। हम हमारा जो एक्सपीरियंस के ऊपर, क्योंकि जैसे अगर दो लेफ्टिनेंट जनरल बोल रहे हैं, किसी एक चीज का विश्लेषण कर रहे हैं, तो उसका कुछ बेस्ड ऑन और एक्सपीरियंस ही बोल दीजिए। 40 साल का एक्सपीरियंस है और हमने इंटरनेशनल सिचुएशंस डील किया है, तो ऐसी चीज हम इन ऐसे भावनाओं को और ऐसे व्यूज को ना थोड़ा वी टेक इट अ लिटिल पिंच ऑफ विद अ लिटिल पिंच ऑफ सॉल्ट। A deeper analysis has to be done before we या do any such actions, basically. ठीक है ना। What's the possibility of Pakistan becoming Afghanistan and Afghanistan will be now used as Pakistan has been? I think this is as his name suggests. Uh, Uh, he seems to be an original thinker. In any case, Afghanistan is already gone ahead of Pakistan even in the failed state index. yeah, If you look at the failed state index, Pakistan is now surging ahead of yeah, most of the countries. It is going to be touching the top lot very soon. Afghanistan's problem is the location of Pakistan is too damn important for the world. It was created by Winston Churchill. Pakistan was carved in a manner by Winston Churchill at the time of partition, in a manner that it served the interests of the West and the US. Because UK was a declining power at that point in time, it aligned itself to the US, and in anticipation, and that is why you will see that the US has consistently used Pakistan for all its activities in this part of the world, whether it is yeah, against Russia, whether against China, whether against Afghanistan, Iran. This is their firm base. Afghanistan can't serve that. It's a landlocked country. yeah. You see, the only thing I'll add to whatever General Dushyant has said, आप देखिए जो हमने जनरल गौतम मूर्ति के साथ एक वीडियो किया था ऑन पाकिस्तान आर्मी, इसको दोबारा देखिए, क्योंकि उसमें हमने देखा कि उसका हिस्ट्री क्या है, कौन कौन क्या क्या हुआ है। उसमें जनरल गौतम मूर्ति सेड वन थिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ही सेड एज ऑफ टुडे Afghanistan seems to be more stable than Pakistan. And the question he asked me was, भाई कौन किसको स्ट्रेटेजिक स्पेस दे रहा है? इनका जो पाकिस्तान का जितना भी स्ट्रेटेजिक स्पेस एरिया तो फेल हो गया, वो फेल हो गया। ऐसे लग रहा है कि अफगानिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक स्पेस पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक स्पेस का मतलब सिर्फ आने की बात नहीं है, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक स्पेस अफगानिस्तान इज टेकिंग फ्रॉम पाकिस्तान, and Pakistan has lost that economic space and the commercial space and the humanitarian space, right? So ये सोच जो है ना, थोड़ा अगर आप डिफरेंट तरीके से, इसीलिए मैंने ये सवाल आपका लिया था, सोच अगर डिफरेंट तरीके से होगा, to a large extent Pakistan's sovereignty has been surrendered in that belt, right? It's gone. So there is a issue, and yeah, it will not vanish. The day they Okay, get the access to border, yeah, I think Afghanistan will become Pakistan. Pakistan. Okay, That's the bottom line. That's the yeah. bottom line. Okay, sirs, Vijay Kumar says, I don't think IK will come as PM because army, despite being divided, they don't allow guys to override. So there are many parties to take a swing because they have a hold on institutions. Vijay, that's our opinion. We'll leave it at that. Yeah. Okay. Yeah, Srinivas Rao Batula, probably for the first time I've seen his name. How long Pakistan will survive with weak economical conditions? देखते हैं क्या होगा। Anybody's guess. एनीबॉडीज गेस। देखिए एक चीज याद रखिए, हम सब बोल देते हैं बड़ा आसानी से कि पाकिस्तान टूट जाएगा, बिखर जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, इम्प्लोड हो जाएगा। रिमेंबर, दिस इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री, इट हैज गॉट 220 मिलियन पीपल। ये जाएंगे कहाँ, राइट? ये कहीं नहीं जा सकते, ये वहीं रहेंगे। दूसरी बात, इनके अंदर भेदभाव नहीं है कि आप सिंधी हो, मैं पंजाबी हूं, अलग रहना चाहता हूं।
वो मांग नहीं है कि टूटने के ये, ठीक है। और ये एक इकोनॉमिकली जुड़े हुए हैं थ्रू इंडस रिवर, ठीक है। ये इंडस इज द बिग जॉइनिंग फैक्टर। जोग्राफिकली दे आर बाउंड टुगेदर, right? Theologically they are bound together, culturally they are bound together, whether you like it or not. Punjabis and Sindhis, so But they, yeah, bulk of them are actually original inhabitants of Indus Valley civilization. civilization. So they will not, it will not break. It will become weaker, weaker and weaker. It will become troublesome, etc., etc. Breaking, I don't visualize. And you never know when a leader comes who resurrects them. See, Ah, ultimately, I see Pakistan as a crisis of leadership as of today. yes, I agree with you. In Right? fact, one of the what do you call journalist has said today, again from Dawn, Pakistan is a human capital disaster Correct. as of today. So a human capital disaster can only be resurrected by a human leader. Good leader. Who Yes, knows? For all you know, Imran Khan coming back as the leader, giving leadership might catalyze Pakistan. He yes, might not be a great leader in terms of reviving Pakistan, but he might give that leadership to bind Pakistan together. yep, Pakistan might struggle, it might go worse till another leader comes who will do something different. So, better. I mean, that's the thing. It's not going to be, ये जो कहानी है ये अगले 10-15 साल चलेगा मिनिमम। So let's be very clear, ये एक दिन में बाहर जाने वाला नहीं है। Absolutely. Right. Uh, okay. So I think we've had some great questions, some great views, some great opinions, and we've also had a different format. आज का format completely different था। I turned it around. Oh, ठीक है. That's what we had said कि आज कि ये Yeah, आज अलग format था, yeah. right? It was a two-way process. I would say that. Yeah. हाँ, right. Vijay Kumar, last question I'll take. Vijay keeps coming back. My question is, does Pak army is going to shrink in terms of quantity and quality? It's already shrunk, so don't worry. Quantity Yeah. is a different thing. Quality, I think it's gone. Okay. Quality as such is affected. Yeah, it's very badly affected. So we leave it at that. I think we've had a great evening. Kal Thank ke you, sir. din, we will talk of nuclear dynamics with General P.R. Kumar because he's my go-to man when I talk of nuclear issues. Nuclear issues. Yeah. Okay. With this, Yes, sir. thanks a lot. Thanks a lot, General Dushyant, for making it a great evening. Thank you, And sir. Jai Hind, and we'll see tomorrow. Thank you, sir. Thank you very much. It was a lovely discussion which we had. Yeah. I had fun. I enjoyed it. I enjoyed it also. Okay. Okay. Good Bye. evening. Jai Hind. Jai Hind.